In silent feature of the Constitution of India. What are the essential characteristics of the preamble? Characteristics of the preamble: write a short note on the democratic socialism in India. Write a short note on the preamble of the Constitution of India. ये सभी हैं, मतलब पहले क्या हुआ था, फ्लोइंग आर द साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. नंबर एक हो गया लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. नंबर दो, पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल. पार्टली रिजिड एंड पार्टिकल फ्लेक्सिबल. नंबर थ्री, यूनिवर्सल एडल्ट एडल्ट फ्रेंचाइजी. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. नंबर चार, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. नंबर चार हो गया पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. नंबर चार क्या हो गया पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. नंबर पाँच, फेडरल पॉलिटिक्स विद ए यूनिटरी बाइस. नंबर पाँच क्या हो गया फेडरल पॉलिटिक्स पॉलिटिक a federal politic with a unitary bias. A federal politic with a unitary bias. Federal politics with a unitary bias हो गया. Federal politic with a unitary bias हो गया. Federal politic with a unitary bias. नंबर सिक्स हो गया फंडामेंट हो गया. नंबर सिक्स हो गया फंडामेंटल राइट. नंबर सिक्स क्या हो गया नंबर सिक्स हो गया फंडामेंटल राइट. और नंबर सेवन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. नंबर एट, फंडामेंटल ड्यूटी. नंबर एट क्या है फंडामेंटल ड्यूटी हो गया. नंबर एट. नंबर एट हो गया फंडामेंटल ड्यूटी. नंबर एट क्या है फंडामेंटल ड्यूटी. नंबर एट फंडामेंटल ड्यूटी. नंबर नौ, सिक्योर सिक्योर. नंबर नौ हो गया सेकुलर स्टेट. नंबर नौ क्या हो गया सेकुलर स्टेट हो गया. नंबर नौ. नंबर नौ की स्टेट. नंबर नौ क्या हो गया सेक्युलर सेक्युलर स्टेट हो गया. नंबर नौ. नंबर नौ हो गया सेक्युलर स्टेट. नंबर हो गया नंबर नौ. नंबर नौ, सेकुलर स्टेट इनक्रॉजेज इन एनी रिलीजन्स ऑन फुल स्टॉप contemporary on the contemporary right to freedom of religion is ensured in the constitution, and people belonging to any religions group have the right to profess right to profess हो गया PROFE profess practice or propagate any religion they like full stop. 10 हो गया independent judiciary. 10 हो गया in independent judiciary. The judiciary occupy an important place in our constitution, and it is also made independent of the legislature and the executive full stop. The Supreme Court of India stand at the apex in the single integrated judicial system full stop. It act has prosecutor of fundamental right of Indian citizen, and guardian of the constitution. Full stop. If any law passed by the legislature or action taken by the executive the contravening the provision of the constitution, they can be declared as null and void by the Supreme Court. Full stop. Thus it has the power of judicial review. It has the power of judicial review. Full stop. But judicial review in India constitute a middle path between the American judicial supremacy in one hand and British parliamentary supremacy in the other. Full stop. is 11 single citizenship. The Constitution of India recognizes only single citizenship. Full stop. In the United States, there is provision of dual citizenship. Full stop. In India, we are citizen of India only, not of the respective state, to which we belong. Full stop. This provision would help in promoting unity and integrity of the nation. Promoting unity and integrity of nation. Single citizenship.
नंबर 11 क्या है? सिंगल सिटीजनशिप, CITIZEN citizenship, single citizenship. The Constitution of India recognizes only single citizenship. Full stop. In the United States, there is a provision of dual citizenship. Provision of dual citizenship in India. We are citizen of India only, not of the respective state to which we belong. Which we belong. Full stop. This provision would help in promoting unity and integrity of nation. Unity and integrity of nation. 12 emergency provision. 12 हो गया emergency provision. Article 352, 356 and 360 of the Constitution provide the provision for emergency. Full stop. According to these provision, when the head of the state is dissatisfied with the administration of the country or a part thereof in accordance with the normal procedure laid down in the constitution, he can declare emergency and take the administration of the country or a part thereof in this her own hands. Full stop. Declaration of emergency has far-reaching effect. Full stop. Declaration of emergency has far-reaching effect. हो गया has far-reaching effect. हो गया. Declaration of emergency has far-reaching effect. हो गया. Declaration of emergency has far-reaching effect. हो गया. Has far-reaching effect. Declaration of emergency has far-reaching effect. Full stop. With such a declaration, if fundamental right are abrogate, get abrogated the court of law. Abrogated of the court of law can refuse to listen to the petition. For the enforcement of these right. Enforcement of these right. Full stop. The federal setup of the country. The federal setup of the country practically turn out to be a unitary one, and no bill can be introduced in the legislature. No bill can be introduced in the legislature without prior permission of the head of the state. Full stop. Beside during the financial emergency. The financial decision on the part of the government at all level rest with the head of the state. Nature, silent feature and preamble of the Constitution of India. Meaning of preamble mean term. The term preamble mean introduction to a statute. Introduction to a statute. Introduction to a statute. Full stop. This it is the introductory part of the Constitution. Case law. Berubari case 1960. Preamble whether a part of the Constitution. Berubari case or but in Keswanand Bharati versus State of Kerala 1973. But in Keswanand Bharati versus State of Kerala 1973. But Keswanand Bharati versus State of Kerala. Purpose of the objective or content of the preamble. हो गया sovereign. SOVEREIGN. Sovereign socialist. Axel Weir was Union of India. Year 1979. Secular हो गया. Secular और case law SR Bombay
SR बॉम्बी BOMMAI बॉम्बी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया 1994। टर्म डेमोक्रेसी हो गया, टर्म डेमोक्रेसी ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमो विच मीन द पीपल्स, क्रेटोस विच मीन अथॉरिटी, क्रेटेस मीन अथॉरिटी, रिपब्लिक हो गया। द प्रेम्बल सिक्योर टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, जस्टिस हो गया, जस्टिस नंबर 2 लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीव फेथ एंड वर्कशिप हो गया। नंबर 3 इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, 4 फर्टिनिटी, 5 यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन। और केस लो सेल वर्सेस नेशनल यूनियन वोटर फ्रंट वर्कर्स, यूनियन नेशनल, केस लो नेशनल सेल वर्सेस नेशनल यूनियन वोटर फ्रंट वर्कर। और कैन द preamble can be amended, केस लो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। उसके बाद एक्सप्लेन साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 2 पार्टली रिजर्ड एंड पार्टी फ्लेक्सिबल। नंबर 3 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। नंबर 4 पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, नंबर 5 ए फेडरल पॉलिटिक विद ए यूनिटरी बाइस, नंबर 5 हो गया फेडरल पॉलिटिक विद ए यूनिटरी बाइस, फेडरल पॉलिटिक विद ए यूनिटरी बाइस, ए फेडरल पॉलिटिक्स विद ए यूनिटरी बाइस, फेडरल पॉलिटी विद यूनिटरी बाइस हो गया। नंबर 6 फंडामेंटल राइट, नंबर 6 क्या हो गया फंडामेंटल राइट हो गया। नंबर 6 क्या हो गया फंडामेंटल राइट। नंबर 7 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नंबर 7 हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नंबर 8 फंडामेंटल ड्यूटी, नंबर 8 क्या हो गया फंडामेंटल ए न्यू पार्ट 4A after the directive principle of state policy was incorporated in the constitution by the 42nd amendment 1976 for the fundamental duty. These duty are number 1 to abide by the constitution हो गया, to abide by the constitution and respect its idea and institution the national flag and the national anthem हो गया, national flag and national anthem। Number 2 to cherish cherish and follow the noble idea which inspired our national struggle for freedom, Third, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. Fourth, to defend the country and render national service when called upon to do so. 5, to promote harmony and the spirit of the common brotherhood amongst all the people of India, transcending religions in linguistic, regional or sensational diversity, to renounce practice derogatory to the dignity of women, 6, to value and preserve the rich heritage of our composite culture. 7, to protect and improve the natural environment including forest, lake, river and the wildlife, and to have compensations for the living creature again, 8, to develop scientific temper, humanism and the spirit of the inquiry and reform. 9, to safeguard public property and to abjure violence. 10, to strive toward excellence in all sphere of individual and collective activity, so that the nation constantly rise to higher level of the endeavor and achievement. 9, सेकुलर स्टेट हो गया, 9 सेकुलर स्टेट। 10 हो गया इंडिपेंडेंट जुडिशरी, 11 हो गया सिंगल सिटीजनशिप, 12 हो गया इमरजेंसी प्रोविजन हो गया, 12 हो गया इमरजेंसी प्रोविजन